biggest story that we have in fact seen is with regard to the notification that has been issued by the central government over CAA, which is the ministry has in fact notified the Citizenship Amendment Act's rules, paving the way for the law's implementation across the country. The law makes it easier for Hindus, Sikh, Jain, Buddhist, Christians as well as Parsi refugees from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan to get Indian citizenship. Now, the applications for the citizenship will be submitted in a completely online mode. This comes weeks after Union Home Minister Amit Shah had declared that the law would be implemented before the Lok Sabha elections. The law aims to give citizenship to non-Muslim migrants from these countries who came to India before December 31st, 2014. Congress said that it was a divisive step by the government ahead of the elections. In West Bengal, Mamata Banerjee has said that the TMC will oppose the law if it discriminates against the people. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan says that CAA will not be implemented in the state at all. Meanwhile, OIC of the AIMIM has said that the CAA was divisive and it made Muslims second-class citizens. Delhi Chief Minister called it part of vote bank politics, and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that the implementation of CAA will be historic. Meanwhile, there have been protests that have broken out in Assam over CAA. The protests were held by the Assam Students' Union. The Guwahati police, meanwhile, has issued a legal notice to the organizations which have called for a hartal in Assam to protest against the contentious Citizenship Amendment Act. The 16-party United Opposition Forum of Assam has announced a statewide hartal today, besides taking up other agitation programs in a phased manner. What it primarily does is make some changes in the original Citizenship Act of 1955. So basically, the Citizenship Law or the Citizenship Act of 1955 basically gave out how a person could be considered to be a citizen of this country. Now, what has happened is that in 2019, the Parliament of India enacts a law. It enacts a law and says that there are three countries, Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, where people of various religious denominations are facing persecution and they have fled those countries and come to India. And we are going to grant them citizenship of India provided they are Hindus, Sikhs, Christians, Jains, but not to Muslims. Now, this is where the problem arises, because religion becomes the deciding factor to determine whether under the new law or the new change, the Citizenship Amendment Act, even Muslims, those who have been persecuted in these three countries and have fled and come to India, the question now arises are, why are you discriminating against Muslims? If they are facing religious persecution, they should be put on the same footing as people of other denomination. Now, this is the basic problem. The second problem with this Amendment Act or the rules, as I always believe, is that the devil lies in the details. So broadly, the government of India has been saying ever since 2019, when the law was enacted, that this is a law which grants citizenship and does not take away citizenship of any person. So please don't be misguided by the noise which is happening on various platforms that people will be deprived of their citizenships because once this law comes into place, it will be problematic. The problem, when I say this, is with respect to the northeastern states, Assam specifically, Tripura, West Bengal, where we have a large number of illegal migrants who have percolated through the borders to these northeastern states. Now, Assam is particularly problematic because the government of India has the Assam Accord, which says that people
illegal immigrants or illegal migrants who came into India after a particular cut-off date will not be considered to be citizens of this country. But now, what the government does, in violation of that accord, suddenly takes up the date to 2014. It says that any of the persecuted people from these three countries of Pakistan, Afghanistan and Bangladesh have come into India, and if they belong to a particular religious denomination, minus Muslims, will be given the citizenship of India. Now, this is where the trouble lies, and I believe that this particular rules will be challenged in the Supreme Court for being discriminatory and violative of Article 14 and 21 of the Constitution. Article 21 is the right to life. Article 14 is right to equality. So the basic argument which will be given in the Supreme Court of India is that, number one, it does make religion a criteria for determining as to who gets citizenship of this country, which is basically in violation of Article 14. देखिए बात यह है, सीए क्या है, किसको नागरिकता देना है, ये वो उसके लिए कानून लाए, जबकि जरूरत ही नहीं थी। आज भी केंद्र सरकार अपने विवेक से और किसी के उस पे मांगने पर वो नागरिकता दे सकते हैं, तो सीए की जरूरत क्या थी? सर, कई स्टेट ऐसे भी हैं सर जो उनको जरूरत नहीं है कि यूनियन को फॉलो करें। ऐसी स्थिति में क्या लगता है सर, समूचे देश में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार का है। सर, गौशाला आप पर क्या कहेंगे? गौशाला के लिए ऑर्डर हुआ है। बात यह है कि इनको हिंदू मुसलमान के अलावा तो कोई इनके पास मुद्दा ही नहीं है। सर, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, छोटा मध्यम व्यापारी परेशान है, और इनको हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं। After a very long time of more than 3.5 years, they have notified, and they would have taken a decision earlier itself. Who said no? Now at the time of elections, where there will be a lot of communal issues may start. We don't want anything to start. We want a peaceful country. We want all sections of the society to be together. So this is not the right time. They could have taken earlier whatever they stand in the court, because they are the absolute majority. The timing of taking a decision is completely wrong, number one. Number two, that was not needed for this country, according to me. Sir, in the Gazette notification that has been passed by the Ministry of Home Affairs, they state that the Citizenship Amendment Act is for to give the citizenship and not to take away any sort of citizenship. See, now they may tell whatever it is. You know how the people were being agitated, what all has happened. Already my AICC has come out on a clarification on this issue. I stand by their statement. The Congress will oppose this, sir? No, definitely this is not the right time. This is not the right time. That means they have been disturbed on this issue. I am just watching the notification. अभी notification नहीं निकाला, rules ने निकाला. रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो आप उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वाचिंग। हम जब रूल्स निकालेंगे हम उसको स्टडी करके जो बताना है कल बताएंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 2020 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाल गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। ये बहुत बढ़िया कदम है और इसमें ये बहुत क्लियर है, किसी का सिटीजनशिप छीनने का एक्ट नहीं है। ममता बनर्जी कोशिश किया भ्रम पैदा करने के लिए, फिर करेगी वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति के लिए, उसका चक्कर में मत पड़िए। ये आइन, ये लॉ बहुत क्लियर है। इसमें उद्वास्तु रिफ्यूजी होकर जिसको आना पड़ा रिलीजन ग्राउंड में, उसको देने का है। किसी को आपका सिटीजनशिप छीनने का कानून नहीं है।
हम पूरा बंगाल में आज खुशी का माहौल है। सब लोग मोदी जी को, अमित शाह जी को तारीफ कर रहा है, हर्षोल्लास हो रहा है, मिठाई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और मतुआ समाज का जो प्रभु हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, उनको शरण कर रहा है। Diversionary tax is clearly. The act had been passed in the parliament 4 years and 3 months before. Why this delay? The government, if the government has, they have some sincerity on this issue, they could have done this order 4 years before. They could have been enacted this rule 4 years before. They didn't, just before the election announcement, 2, 3, 4 days before the election announcement, doing all this thing, only one agenda to diversify, to divert the entire attention of these current issues, which Rahul Gandhi and Congress is raising: unemployment, then unemployment, price rise, and the farmers issue, like say several issues which we are raising that issue. Then finally, it is clear-cut. Diversionary tax is to divert the attention from the Supreme Court verdict on electoral bond today. Where is the answer for that? Where is the answer? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में CAA लागू कर दिया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इससे निश्चित रूप से जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वहाँ धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर जो भारत में शरण लिए हुए हैं, ऐसे जो 2014 के पहले आए हैं, उनको अब इस कानून के लागू होने से भारत की नागरिकता मिलेगी और वो लोग भी जिस तरह से सामान्य व्यक्ति यहाँ का जीवन यापन करता है, उस तरह का अधिकार उनको मिल जाएगा और उनका जीवन सफल हो जाएगा। 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले CAA को कानून के तौर पे लाया जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं। हम CAA के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है। आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है। आज महंगाई का दर बढ़ रहा है। तो मोदी जी और देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाकर और उनको नागरिकता देने के बजाय हमारे देश के युवाओं को नौकरी देना, हमारे देश के आम परिवारों को महंगाई से निजात दिलाए, हमारे देश के गरीब परिवारों को घर दिलाए, अपने ऊपर छत दिलवाए, ये तो मोदी जी ने 10 साल से किया नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यकों को भारत लेके आइए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत के लोग तो वोट नहीं देंगे उन्हें, तो और लोगों को भारत की नागरिकता दिलवाइए। मैं फिर से कह रही हूं, CAA का पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि पहले मोदी जी हमारे देश के लोगों का ध्यान रखें, उन्हें महंगाई से निजात दिलाएं, बेरोजगारी से निजात दिलाएं। बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। लोकसभा से कानून पारित हुआ था और अनेक लोग इससे लाभान्वित होंगे। ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। भारत सरकार को बड़ी देन मानी जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी देन है। अनेक लोग जो परेशान थे, उनको शासन की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था और वो नारकी जीवन जीने पर मजबूर थे। ऐसे लोगों को न्याय मिला है।